Every second counts. Every decision can mean the difference between life and death. But in Pakistan, the journey of an ambulance is more than just a race against time. It's a battle against a broken system. With a population exceeding 240 million, Pakistan faces an immense challenge in providing efficient emergency medical services. A nation where traffic congestion, lack of trained paramedics, and financial limitations turn every medical emergency into a life-threatening ordeal. In Pakistan's major cities, emergency services struggle, but at least they exist. In rural Pakistan, an ambulance is often a luxury, an hour away, if it arrives at all. In the chaos of an emergency, an ambulance is more than just a vehicle. It's a lifeline. But in Pakistan, where only 4.1% of patients use ambulances compared to 15% in the US, and a staggering 67.3% in India, that lifeline is often out of reach. Out of the many ambulance services in Pakistan, one of them is the Edhi Foundation. Established by Abdul Sattar Edhi, the Edhi Foundation runs one of the world's largest volunteer ambulance networks, operating a fleet of over 1,800 ambulances, 2 aircraft, and 1 helicopter. In addition, they also have 28 rescue boats to assist in flood-affected areas. One of the team members, Salar, interviewed the head of the Edhi Foundation zonal office here in Islamabad. Here is the following interview recorded on tape. So, sir, first question is, how do you deal with traffic problems in emergencies? जब भी एम्बुलेंस की भेजनी होती है, जब भी कोई ना कोई एक होता है तो आप कैसे उसको हाथ से हाउ डू यू रीच? देखिए, एक्चुअली हमारा जो टोल फ्री नंबर है ना 115, तो whenever the accident happens anyway, तो मोस्टली पीपल जो है ना वो 115 पे कॉल करते हैं और ये हमारा कंट्रोल रूम है साथ में, ठीक है। और इस कंट्रोल रूम के जैसी कॉल आती है तो हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो एक जगह के ऊपर पार्क नहीं है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में। जैसे पिंड हॉस्पिटल के सामने हमारी पार्क है, वहाँ पे हमारा सेंटर है। तो उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल में भी है, जिंदर हॉस्पिटल में, इसमें कंट्रोल बोर्ड के हॉस्पिटल में भी है, होली फैमिली के बाद सेक्रेटरी में हमारा है, और सादकाबाद में है, सदर कंट्रोल बोर्ड के, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में RIC में खड़ी है एम्बुलेंस। तो जहां भी एक्सीडेंट होगा हमारी हर गाड़ी के अंदर वायरलेस लगा हुआ है। हम उसी वक्त यहाँ कंट्रोल रूम से वायरलेस के ऊपर कांटेक्ट करेंगे और जो भी नजदीक में एम्बुलेंस होगी हम उसको उसी वक्त रश करने के लिए बोलेंगे कि फलां स्पॉट के ऊपर आप पहुंचे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। तो वो भी वहां से मरीज को उठा के उसी हॉस्पिटल में लेके जाएगा जो कि उस एरिया से नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एक्सीडेंट होता है फैजाबाद के ऊपर, हमारी कोशिश होगी तो उसको या तो पिम्स में ले आए या सेंट्रल हॉस्पिटल में, ये डिपेंड्स ऑन एक्सीडेंट। तो वो रोड के किस साइड के ऊपर है, अगर वो लेफ्ट साइड के ऊपर है तो इट मीन्स कि हमें यूटर्न लेना पड़ेगा इस जाने के लिए बंजीर हॉस्पिटल में। तो हमारी कोशिश होगी कि रश करें, सीधा पिम्स हॉस्पिटल में ले आए। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑन स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट। एंड हाउ डू यू प्रायोरिटाइज इमरजेंसी? आपका कोई सिस्टम है इसका? कैसे मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल के सोचे 2 अलग अलग इमरजेंसीज हों, आप किसी एक को कोई चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं? नो। अच्छा, एंड हाउ डू यू डील विद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जैसे फायरवॉल्स या ब्लॉकेज ऑफ द फोन नेटवर्क्स? पाकिस्तान में आपको पता है होता रहता है ना। हमारे अपने वायरलेस सिस्टम है। अच्छा, हर गाड़ी में वायरलेस है। अच्छा, तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। What do you do in mass casualties such as earthquakes? Depends on the area. We control from here whole KPK, whole Punjab, from here to Gujranwala, even Azad Kashmir, Gilgit Baltistan. तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे पास 2 सेंटर्स हैं, स्कर्दू में और गिलगित में। अज़ाद कश्मीर में हमारे पास 6 सेंटर्स हैं जो कि यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन एरियाज, व्हिच एरिया द पीपल नीड हेल्प।
Time is everything in an emergency. In Pakistan, response times vary widely. Chipa reports 5 minutes, Eddie averages 10 minutes in Karachi, and Rescue 1122 aims for under 8 minutes. But how do we compare globally? Speaking of Rescue 1122, this is a government-led EMS service that has rescued over 15.9 million victims since its inception, expanding beyond Punjab into Sindh and other provinces. Rescue 1122 is the only service in Pakistan offering basic life support equipment such as oxygen cylinders and defibrillators, along with trained emergency responders. In contrast, Eddie and Chipa ambulances have minimal medical equipment, and staff often lack formal EMS training. The team leader for Project Redlight, Mustafa, had scheduled an interview with some of the staff at the Rescue 1122 station in Rawalpindi. Here are some of the interviews recorded. नाम और अपना रैंक बताएगा। मैं उस्मान कारी नाम है, LTV में एज आ रेस्क्यू 122 में जॉब कर रहा हूँ पर पिछले 7 साल से। ठीक है, माशाल्लाह, तो लंबी सर्विस है आपकी 7 साल जी। अच्छा, ठीक है, तो आप एज अ ड्राइवर काम करते हैं। आपको जब ये ट्रैफिक प्रॉब्लम मिलती है, रश होता है, तो आप उसमें कैसे डील करते हैं? से आपके पास कोई हाईली क्रिटिकल पेशेंट है तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं? उस पर यह है कि हम सबसे पहले अपना होटल लगाते हैं और सेफ्टी फास्ट जो है ना, पहले सेफ्टी का खास ख्याल रखते हैं ताकि जान अपनी गाड़ी किसी के साथ हीट ना हो, दूसरों की मतलब एक जाम जाते हुए ये ना हो कि बंदा किसी और की जान ले लें। इसमें सेफ्टी फास्ट है, बाकी होटल लगाते हैं और PA सिस्टम है, उस पर जाना जो रास्ता नहीं देते उन्हें हम करते हैं कि रास्ता दें, आगे सेटें, इस जान। ठीक है, और जैसे आपकी जो सर्विस, आपकी जो पूरी 7 साल की सर्विस है, उसमें आप क्या कहेंगे कि आपकी सक्सेस रेट क्या थी कि आपने बंदे को पहुंचा दिया या बचा लिया? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या होगा? इसमें बहुत से ऐसे जो है ना, मतलब क्रिटिकल पेशेंट जो है ना, हमने बहुत कम टाइम में जो है ना हमने हॉस्पिटल पहुँचाएँ जिनकी वजह से उनकी जान बच गई है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे जो है ना हैं। और आपके जो मेजॉरिटी पेशेंट होते हैं जब आप पहुंचते हैं, उनका ये होता है कि आपको वहीं पर बचाना पड़ता है या आप उनको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं? हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मतलब आगे उन्हें जाना, आगे एडमिट करवाते हैं, सारे डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं कि सब कुछ सब बता के ना फिराते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। Here is an interview with Rescue 1122 EMS technician Mehwish Mehdi. ठीक है, और आप एज ए EMT काम करती हैं, तो आपका क्या, आप बोलेंगी कि आपका क्या ओपिनियन है कि जब आप पहुंचती हैं तो आपको क्या वहीं पर बचाना पड़ता है या आप उनको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? ऐसा है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद हैं गाड़ी में, जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करके पेशेंट की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कह लें कि कार्डिक अरेस्ट में है पेशेंट का दिल बंद हुआ हुआ है और हम उसके दिल को बहाल करने की, मतलब जब तक हॉस्पिटल पहुंचने हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसका दिल बहाल। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि विद इन CPR से हमने पेशेंट की जान बचाई है एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल पहुँचने से पहले। ठीक है, और आपके जो ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस आते हैं वो किसके बारे में होते हैं? ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी? हाँ जी, सबसे ज़्यादा हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, हार्ट अटैक है, SOB का पेशेंट है, डायबिटिक है, इससे रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी की रेशियो हमारे पास ज़्यादा। ट्रैफिक एक्सीडेंट भी है लेकिन ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी की कॉल है हमारे पास। ठीक है, और जो आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है वो रेगुलरली अपडेट और मेंटेन होती रहती है? जी बिल्कुल, हम रेगुलर सबसे पहले ड्यूटी जब हमारी शुरू होती है हम सारे इक्विपमेंट चेक करते हैं, उनकी सफाई वगैरह, और कोई ऐसा इक्विपमेंट जो ख़राब तो नहीं है। और सारी मेडिसिन हम अपनी एम्बुलेंस में जैसे ही हमारी शिफ्ट शुरू होती है सारी एम्बुलेंस हम अपनी उसमें मेडिसिन ओके करते हैं ताकि जो इमरजेंसी के दौरान हमें इस्तेमाल करनी पड़े और कोई चीज़ हमारे पास कम ना हो। ठीक है, और आप क्या बोलेंगी कि आपकी पर्सनल सक्सेस रेट क्या है एज एन EMT? किस हवाले से, मतलब कि पेशेंट को आपने बचा लिया, वेदर दैट्स ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लेके जाके, आप क्या बोलेंगी कितने व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स दैट यू हैव सेव्ड?
मैं अपनी तरफ से मेरा यही होगा कि मतलब हमने अपनी इमरजेंसी सर्विस की वजह से एक पेशेंट की हमने जान बचाई है और मतलब विद इन मिनट्स हमने रिस्पॉन्स किया है और उसकी वजह से मतलब एक कीमती जान हमने बचा ली है। अपनी तरफ से मेरा यही व्यू है कि हमारी सर्विस की वजह से जल्दी पहुंचने की वजह से किसी बंदे की जान इस एम्बुलेंस की वजह से बच गई है। ठीक है, और आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है टू रीच टू अ पेशेंट? हमारे एम्बुलेंस में 7 to 10 मिनट्स है। एम्बुलेंस में किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए 7 to 10 मिनट्स हमें लगते हैं लोकेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। Ambulance response times vary by region. In Pakistan, Cheaper ambulances respond in 5 minutes, EDI in 10 minutes, and Rescue 1122 in under 8 minutes. In the US, response times range from 7 to 8 minutes in urban areas to over 14 minutes in rural regions. The UK targets a 7-minute response for critical cases, but averages 10 minutes. A global survey found that 79% of countries had response times under 60 minutes, with 51% responding within 30 minutes. While ambulance services in Pakistan often face challenges in prioritizing patients, an unexpected yet remarkable initiative exists: an animal ambulance. Dedicated to rescuing injured and sick animals, this service provides urgent care to strays and livestock alike. The Benji project, run by the NGO CDRS, established in the late 2000s, is Pakistan's first animal ambulance service. It provides emergency care to stray animals with the help of trained veterinarians, some of whom are volunteers. The service is accessible via WhatsApp, where people can request an ambulance equipped with a driver, a catcher, and a veterinarian. Minor injuries are treated on site, while severely injured or ill animals are taken to a shelter for recovery. The project also conducts spaying and neutering to control the stray population. Instead of relocating animals, they are returned to their original territories to prevent territorial conflicts among strays. The initiative is driven by the belief that since humans domesticated animals, it is our responsibility to care for them, especially as they are voiceless and vulnerable. The race against time can be won. With collaboration, investment, and awareness, Pakistan's EMS system can evolve from chaos to efficiency. The question is, how long before we make that change?